वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, और आज हम बाजारों के साथ साथ इकोनॉमिक पॉलिसी पे भी बात करेंगे। जो आरबीआई की पॉलिसी आज घोषित हुई, उसके चलते क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उस पॉलिसी में ऐसा क्या खास है जिन बातों पे आपको ध्यान रखना चाहिए, जो बाजार को डायरेक्शन भी दे सकता है। इस पे हम चर्चा करेंगे। एक नजर पहले बाजारों को देख लेते हैं। अब इस समय निफ्टी करीबन 70 अंक नीचे कामकाज करते हैं। वहीं आज निफ्टी बैंक में थोड़ा बहुत बॉयंसी देखने को मिल रही है पोस्ट द पॉलिसी। 150 अंक की मजबूती इस समय निफ्टी बैंक में देखने को मिल रही है। आज बैंक्स में से एचडीएफसी बैंक काफी अच्छा कामकाज करते हुए, एसबीआई भी आज इंडाइसेस को कुछ होल्ड करते हुए। ओवरऑल द मार्केट्स आर अंडर प्रेशर क्योंकि ग्लोबल सिनेरियो लुक्स वीक, डोमेस्टिकली वी स्टे स्ट्रांग। पर इकोनॉमिक पॉलिसी में ऐसा क्या था जिस पे आपको नजर रखनी चाहिए, इस पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं, Mr. Prasenjit के Basu. He is an independent economist. Very good afternoon, sir, and thank you so much for taking out the time. So policy में कोई बदलाव नहीं, स्टेटस को, नो चेंज इन पॉलिसी। और अगर हम इन्फ्लेशन सीपीआई की बात करें, वहां उसको भी मेंटेन कर दिया गया है 4.5% के आसपास। जीडीपी फोरकास्ट फॉर FY25 retained at 7.2%, and but Q1 में जीडीपी में भी impacted a bit, और जहां पहले 7.3% का लक्ष्य था, उसको घटा के 7.1 कर दिया गया है। ओवरऑल पॉलिसी मेजर्स में आप खास क्या देखते हैं? देखिए, पहला जो नंबर में मेरा ध्यान पहुंचा है वो है Q2, इस क्वार्टर की जो इन्फ्लेशन फोरकास्ट है, और वो है 4.4%। तो पिछले मीटिंग के समय इस क्वार्टर की इन्फ्लेशन फोरकास्ट था 3.7%। तो अभी ये दे हैव रेज दैट, क्योंकि सब्जी की दर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। In the month of June there was a big increase in vegetable inflation. Month on month increase was extremely severe, और इसके वजह से जुलाई में भी कोई कमी नहीं आई, ये कह रहे हैं। तो the inflation rate is still 4.4% headline. तो इसीलिए there's been no change in policy stance. Majority opinion in the MPC is that withdrawal of accommodation should continue. मेरे ख्याल में the minority opinion जो है, दो MPC members हैं जिसने कहा कि न्यूट्रल स्टांस होना चाहिए पहले, और इस मीटिंग में वो वोट किए हैं इंटरेस्ट रेट को कमाने के लिए। तो I think the MPC is slowly moving towards a rate cut, but the main problem is vegetable inflation and consequently headline inflation. If headline inflation stays 4.4% even in the current quarter, अगर आप ध्यान दें पिछले साल के जुलाई और अगस्त में इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा था, 7% के करीब थे। तो उसके तुलना में इस जुलाई और अगस्त में हमारे hope था, we were hoping that there would be a reduction because of the high base. Inflation would be below 4%. वो नहीं होने वाला है। तो that is why I think the first rate cut may be postponed to as late as December. Rate cut तो होना ही है, पर दिसंबर की मीटिंग से पहले नहीं हो सकता, नहीं होने का आवश्यकता है, क्योंकि ये सब्जी की दर अभी भी बहुत ज्यादा है। चलिए, एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिस्टर सरिया अग्रवाल, डीवीपी हेड फंडामेंटल रिसर्च, SBI कैप सिक्योरिटीज से। वेरी गुड आफ्टरनून सनी सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम। सनी सर, आज जो बाजार को थोड़ा बहुत संभाले हुए हैं वो है बैंक निफ्टी। बहुत दिनों के बाद आज निफ्टी नीचे है, लेकिन बैंक निफ्टी ऊपर कामकाज कर रहा है। पॉलिसी के बाद ये मूव देखने को मिला है, क्या सस्टेनेबल है, या फिर आपको लगता है कि
every rise in the market is time to get lighter. Good afternoon and thanks for having me on the show. I think RBI policy जो थी कहीं kind of एक neutral थी from equity market perspective in line with expectation ही रही है policy. Yes, definitely थोड़ा सा फूड इन्फ्लेशन को लेकर के कंसर्न दिखाया है गवर्नर साहब ने, बट आई थिंक एनीवे with normal monsoon, I think those concerns should go away. And there has been no major change as far as target inflation number और GDP number is concerned. तो मुझे लगता है कि मार्केट के पर्सपेक्टिव से पॉलिसी न्यूट्रल रही थी. और रही बैंकिंग शेयरों की बात, तो मुझे लगता है कि एक पिछले 2-3 महीनों से काइंड ऑफ अंडर परफॉर्मेंस चल रहा था बैंकिंग शेयरों में एज कम्पेयर टू अदर बाकी के सेक्टर अगर हम देखते हैं तो आज जो एक माइनर बाउंस है बैंकिंग सेक्टर में, मुझे लगता है कि काइंड ऑफ जिस तरह सेक्टर रोटेशन चल रहा है मार्केट में, उसी के तहत हम देख रहे हैं कि जो बैंक्स में या तो इधर वैल्यूएशन का कंफर्ट है या जहां नतीजे बेहतर आए थे Q4 में, जून क्वार्टर में, उसमें हम हल्की सी बाइंग देख रहे हैं. बट एनीवे कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट मूव नहीं है बैंकिंग सेक्टर में. बट अगर मैं व्यू लेने की बात करता हूं तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से डेफिनेटली बैंकिंग बीइंग अ बैकबोन ऑफ एनी फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, 12 से 14% की जो क्रेडिट ग्रोथ है, आई थिंक उसमें कोई दो राय नहीं है कि if nominal GDP growth is close to 10-11%, I think 12-13% से बैंकिंग सेक्टर ग्रो होते रहेगा. And then there are few private banks which may outpace the industry growth also. तो अगर किसी का लंबा समय का horizon है, when I say लंबे समय at least 12 to 18 months, definitely a bank can be gradually added in the portfolio. बासु सर, आज हमारे गवर्नर ने येन कैरी ट्रेड की भी बात की, ग्लोबल अनसर्टेनिटी की भी बात की, बोला कि अभी तक तो हम जीडीपी फोरकास्ट मेंटेन कर रहे हैं, पर ग्लोबली थिंग्स आर स्टेबल एज ऑफ नाउ, बट मे बी यू हैव टू बी रेडी फॉर एवरीथिंग. ये जो येन कैरी ट्रेड की हम बातें सुन रहे हैं, जिसके चलते हमारे बाजारों में भी बिकवाली देखने को मिली, what is it all about? Is it really going to put a big impact on Indian markets? It will have some impact, but not very large. पहला ये जो है इसको ये जो है येन कैरी ट्रेड, ऐसा होता है कि investors borrow in the yen because interest rates are near zero, were near zero before 31st July, and the yen was expected to continue to depreciate. So if the currency is depreciating and the cost of borrowing in that currency is near zero, then the effective currency adjusted cost is negative. For many currencies, the currency adjusted cost of borrowing in yen is negative, and so it's very attractive. पर इस साल दो चीज हुई है. एक है कि BOJ raised the interest rate from -0.1% to just over zero in March, and then 31st July को फिर से बढ़ोतरी हुआ है, and it has raised the interest rate now to 0.25%, 0.25%. And इसके वजह से yen has changed direction. It has gone from steady depreciation of the last 2 years to a sudden sharp appreciation, brief appreciation to as much as 12% in 1 month. अगर ये ऐसा होता है कि 12% एक महीना में होता, तो there will be a dramatic unwinding of the carry trades. क्योंकि जो लोग येन में लोन लिए थे, उनके लिए अब there's a lot of sudden pain, क्योंकि ये सोच रहे थे कि the cost is zero or negative. It suddenly becomes 12% in a month, which is 144% in a year. तो ये जो है, जब अगर ऐसा होता है, then there is a sudden increase in the pain factor for those who have borrowed in yen to invest in other assets. So in order to repay those loans, or to be in a position to repay those loans, they must liquidate the assets that they have purchased with the liability in yen.
So two things will happen as the yen carry trade, the liability side of the thing is unwound. The yen will appreciate further. Second is that the asset side, all those things that the yen carry trade has been used to fund, those assets will see a decline in value. So there is almost certainly some yen carry trades that were invested in Indian equities, because Indian equities were seen as one of the most attractive assets to be in globally. So there's certainly going to be some unwinding of yen carry trades in India. There'll also be a lot of other assets. Typically, there are very high yielding assets like in Turkey and Argentina, etc., where a lot more of these speculative trades would have been put on. So there'll probably be much more impact on those, but there is certainly कुछ तो असर पड़ने ही वाला है हमारे markets में. Indian equities will certainly see some pressure from the unwinding of the yen carry trade. There's no question about it. And अगले करीब 6 महीनों में ये होता रहेगा. But it's a background factor. It is not the main factor. Now, if you notice that foreign portfolio inflows have been somewhat negative for some time, and the Indian market has been shored up by domestic investors, both mutual funds as well as retail investors have continued to be positive on India, and they have continued to, and this is partly because of SIPs and the inflows into mutual funds remain very robust, and as a result, you continue to see the market holding up. But of course, the market is now relatively fully valued or slightly richly valued, and therefore the unwinding that you're seeing, I think will continue for a while. But if inflation turns out to be better than expected, which I think is quite possible, given that we're going to see a good monsoon. If you travel across the country, you find it's raining pretty much everywhere, almost every day. And so far, the monsoon has been slightly above normal for the country as a whole, although there are certain parts that are seeing deficient rain, which is always the case. You find maybe 1/3 or 1/4 of all districts have uneven rainfall during the monsoons, but there's usually a catch-up factor that happens. The broad factor, though, is that the monsoon is on track nationwide, and so you're going to get a good Kharif crop. When the good Kharif crop comes through, inflation should moderate. So November, December, we'll begin to see a significant moderation in inflation, and that will likely result in a rate cut at the December MPC meeting. Prior to that, there's likely to be substantial further cuts in the US rate. The US rate will probably start coming down as soon as September, at least 25 basis points. If we get worse economic numbers or much improved inflation, that is, if inflation in the US comes down, continue to come down further, then in fact, at some point, we could even get a 50 basis point cut in the US. So if the US is cutting and India isn't, then that'll probably harden the rupee somewhat. And so with the US cutting, if the US cuts more aggressively or gives indications it's cutting aggressively, then the RBI consensus may move away from a 4-2 in favor of not cutting to maybe a 4-2 in the other direction. So we might even get an early rate cut in October. But I think it's more likely a December rate cut. A certainty, I think, is a December rate cut, a small possibility of an October cut. चलिए, इस बीच मार्केट्स जो है वो अब हरे निशान में आ चुके हैं. निफ्टी इज अप nearly 22 points and Bank Nifty is up nearly 300 points now, market at day high. सनी सर, आपको बाजार बहुत सुन रहा है इस समय और ये जानना चाहता है कि जो अर्निंग सीजन हमने Q1 का देखा, उसमें आपके जो the stocks that you track, उसमें कितनों में अपग्रेड हुआ है, कितनों में डाउनग्रेड? आई थिंक अगर अर्निंग पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो एग्जैक्ट नंबर अभी है नहीं मेरे पास, बट ओवरऑल मैं एक जनरल कलर देना चाहूंगा
कहीं ना कहीं अर्निंग सीजन इस बार मिक्स रहा था, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं देखने मिली। स्पेशली जो हेवी वेट सेक्टर्स हैं जैसे बैंकिंग, बीएफएसआई जो है, वहां हमने देखा कि एक थोड़ा बहुत निम में प्रेशर देखा गया, थोड़ा एसेट क्वालिटी को लेकर के कहीं ना कहीं कंसर्न देखा गया। टू सम एक्सटेंट बैंक्स हैव रिड्यूस देयर ग्रोथ गाइडेंस आल्सो फॉर फिस्कल ईयर 25। So banking was kind of a mixed bag. Again, within that, a few private banks have done relatively better, such as Federal Bank or Vysya Bank. They are growing at a relatively faster pace as compared to other large size banks. Coming to auto, again, auto, we have seen a very good set of number. Again, the reason where की टू व्हीलर और पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में, स्पेशली स्पोर्ट्स एसयूवी जो सेगमेंट है, उसमें हमने काफी रोबस्ट ग्रोथ देखी थी पिछले क्वार्टर में, वॉल्यूम टर्म में। एट द सेम टाइम इनपुट कॉस्ट मॉडरेशन हुआ है, उसके चलते हमने मार्जिन एक्सपेंशन आते हुए देखा था। तो आई थिंक विद इन ऑटो इट वाज अ डिसेंट सेट ऑफ नंबर। सीमेंट वाज काइंड ऑफ वेरी फ्लैटिश काइंड ऑफ नंबर। अगेन, सीमेंट में जो प्राइसिंग पावर है कहीं ना कहीं वो सस्टेन नहीं हो पाई है। और एट द सेम टाइम अगेन दिस क्वार्टर इज द मानसून क्वार्टर, तो मुझे सितंबर क्वार्टर से भी कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है सीमेंट कंपनियों से। तो मुझे लगता है कि सीमेंट इज अ प्ले ऑफ अ सेकंड हाफ ऑफ द करंट फिस्कल ईयर। कमिंग टू मेटल्स एंड माइनिंग, आई थिंक मेटल्स में भी काइंड ऑफ मिक्स बैग नंबर रहे थे। कहीं ना कहीं हमने देखा है कि स्टील सेक्टर में इंपोर्ट रिलेटेड जो डंपिंग चल रही है उसके चलते रियलाइजेशन को लेकर कहीं कंसर्न था। एट द सेम टाइम इनपुट कॉस्ट प्रेशर कहीं ना कहीं मॉडरेट हुआ है। तो काइंड ऑफ मिक्स बैग रहे थे। तो आई थिंक ओवरऑल, अगर मैं ओवरऑल FY25 के पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ, तो ऑन हाई बेस ऑफ FY24 जहां हमने ओवरऑल निफ्टी का ईपीएस 15-16% की ग्रोथ देखी थी, तो FY25 इज द ईयर जहां जो ग्रोथ है वो मॉडरेट होकर के 11 या 12% होते हुए हम देखेंगे अर्निंग ग्रोथ की। और जो कंसेंसस एस्टिमेट है FY25 का तकरीबन 1100 रुपए का है ईपीएस का। एंड देन ऑन FY25, मे बी ऑन FY26 विल बी द ईयर जहां हम 15 से 16% की फिर से एक अर्निंग ग्रोथ हम आते हुए देख सकते हैं। हनी सर, तो अगर बसु सर बोल रहे हैं कि एग्रेसिव रेट कट्स हमको यूएस से देखने को मिल सकते हैं सितंबर के ऑनवर्ड्स, अगर ऐसा होता है तो आईटी स्पेस एक मोमेंटम में तो रहा ही है, जहां हम वर्स्ट सिनेरियो जो था उसको पीछे छोड़ चुके हैं। लेकिन अब एक तरफ से ये है कि यूएस फेड रेट इंटरेस्ट रेट घटाएगी, दूसरी तरफ से ये खबरें आ रही है कि यूएस इज गेटिंग इनटू रिसेशन। तो ऐसे में आईटी को कैसे प्ले करना है? Yeah, definitely. I think the scenario is changing very fast. कुछ समय पहले हम लोग बात कर रहे थे कि यूएस में is on the path of recovery and rate cut will again further drive the demand environment. और उसी के चलते हमने एक आईटी सेक्टर में काइंड ऑफ हल्की सी री-रेटिंग भी देखी थी, काफी सारे आईटी स्टॉक चले भी थे। और जब ये लास्ट एम्प्लॉयमेंट का डेटा आया लास्ट फ्राइडे, उसके बाद कहीं ना कहीं अब रिसेशन के कंसर्न भी आते हुए दिख रहे हैं। तो अगेन काइंड ऑफ मिक्स सिग्नल वी आर गेटिंग फ्रॉम एन ओवरऑल इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। बट अगर मैं कंपनी की कमेंट्री की बात करता हूं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो कमेंट्री रही थी इस बार अर्निंग कॉल की, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रही थी, कोई निगेटिव शेड नहीं देखा गया। इनफैक्ट एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग अ गुड रिकवरी इन BFSI एज अ सेक्टर व्हिच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पेंडर ऑन आईटी, स्पेशली इन द यूएस एंड यूरोपियन मार्केट। तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि आईटी में मे बी काइंड ऑफ न्यूट्रल स्टांस हम लोग रख सकते हैं। मे बी लेट अस वेट फॉर अ फ्यू मोर डेटा पॉइंट फ्रॉम यूएस मार्केट एंड देन वी कैन टेक अ कॉल ऑन आईटी। बट हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन लार्ज कैप आईटी कंपनीज अभी भी काफी रिजनेबल वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही हैं। तो डाउनसाइड रिस्क लिमिटेड लगता है अनलेस एंड अंटिल देयर इज सम मेजर मैक्रो इशू एंड दैट कैन लीड टू अ कोलैप्स इन डिमांड। बट ऐसे लगता नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आईटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैकबोन ऑफ एनी कॉर्पोरेट। और वहाँ बहुत एग्रेसिव बजट कट होते हुए हम देखते नहीं हैं। तो एक एटलीस्ट सर्टन जो बजट है वो मेंटेन रखा जा सकता है, मे बी टू सम एक्सटेंट डिस्क्रिशनरी स्पेंड में भी पोस्टपोन टू सम एक्सटेंट। तो मुझे लगता है कि आईटी में एज ऑफ नाउ न्यूट्रल रहूंगा, और एक सिलेक्टिव जो स्टॉक्स हैं जहां बेहतर अर्निंग ग्रोथ की उम्मीद है, जैसे KPIT हो गया विच इज अगेन फोकसिंग ऑन ऑटो, ER&D स्पेस, LTTS हो गया। On among the large cap side companies like Infosys, TCS, those companies can be looked upon. बासु सर, आई रिमेम्बर मैंने आपसे एक साल पहले इकोनॉमी पे डिस्कशन किया था और हम जब रिसेशन की बातें कर रहे थे, तो इन्वर्टेड यील्ड कर्व की आपने हमको बात समझाई थी उस समय। लेकिन अब ये रिसेशन फेयर्स जो है आर दे जेन्युइन? कैन वी से दैट यूएस इज ऑलरेडी इनटू रिसेशन, बट इट्स दैट इट्स नॉट बीन डिक्लेयर्ड येट?
No, yes, a year ago there were still apprehensions of a recession because of the inverted yield curve. पर क्या हुआ है कि until certainly the first half of this year, there was a continuing fiscal stimulus. The fiscal stimulus, the size of the fiscal deficit was running at 6 to 7% of GDP. That is very unusual in US economic history to have a persistent deficit of this size, 7% of GDP. ये बहुत ही कम समय होता है और normally the deficit is 3 or 4% of GDP. अब चल रहा है 7% के करीब. तो इसकी वजह से the recession was averted. Now the fear is that over the next few quarters, the fiscal stimulus may somehow be withdrawn in the sense that अब जो है कांग्रेस यूएस कांग्रेस में opposition की majority है. Republicans are in the majority. They are curtailing the spending power of the administration, and so far we haven't seen the actual impact. But if you look at the latest GDP numbers for the second quarter in the US, the amount of benefit from government spending has come down. The impact of government spending on aggregate demand is a little bit lower. That could be a lot lower in the next 2 quarters, and that factor could weaken the US economy quite a bit. I don't think the US is going into recession any longer. I don't think it is currently in recession. But the unemployment rate is going up. और ये भी है कि जो unemployment rate बढ़ रहा है, that is happening primarily because high-paying jobs are being lost. Net job losses on Wall Street and in Silicon Valley are higher. So there is actually a lot of low-paid jobs. There's sufficient jobs in construction. There's sufficient jobs in manufacturing and things like services, hotels, restaurants, etc. There's sufficient job growth. Where there isn't job growth is in high-paying jobs, which will have a slightly dampening effect on consumption. So I actually have, my daughter has just graduated from one of the top universities in the US, and I find that among her classmates, they're struggling to get jobs. Yale University students are struggling to get jobs. So I note, this is just an anecdote, but it is part of a general scenario where, Silicon Valley and Wall Street are seeing a net shaving of jobs. So I don't think it's a recession, but the unemployment rate is going to be edging up. It's 4.3%, which is normally considered full employment. Full employment is 4.5% or lower. So we're still 4.3. It'll probably get up to 4.5% by September, October. And most likely, in my view, the Fed made a policy error by not cutting at its July meeting. It had a chance to cut, but it didn't cut in July. If you look at month-on-month inflation, in the last 2 months, core PCE inflation is rising just 1% month-on-month. So it is rising less than the annualized pace of 2%, which is what the Fed tries to focus on. And so there was an opportunity to cut in July, but they didn't cut. And they will certainly cut in September. There are now expectations that they might cut 50 basis points in September because unemployment will rise quite a bit more substantially in the next couple of months, and the month-on-month change in core PCE inflation will be very low, will continue to decline, and as a result, there may well be pressure to cut more. Now, the interesting thing is that the Republican presidential candidate is saying, do not cut rates. If you cut rates, you are intervening in the political system. You are trying to help the incumbent. So, if anything, had there not been this political factor, they might even have cut 50 basis points in September. But the likelier thing is 25 basis points, simply because it is political season and they don't want to upset one of the political candidates too much. But you might get 25 basis points in September and 50 basis points
in November. The November meeting is immediately after the election. The next 2 days, 6th and 7th of November, you could get a 50 basis point cut. So the point is, there is room for the US to cut because inflation is moderating and the unemployment rate is going. तो सनी सर, इस समय छुपना कहाँ पे है हमको? Which is the sector that you think that we should be really getting into, या फिर आपको लगता है कि every rise is a sell? आई थिंक थोड़ा सा मार्केट का जिस तरह से स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है कि थोड़ा निम्बल फुटेड रहना होगा. सो सम प्लेसेस वेयर यू आर गेटिंग प्रॉफिट, यू नीड टू कीप ऑन बुकिंग प्रॉफिट ऑल्सो. बट एज ऑफ नाउ जो सेक्टर मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में फेवर में रहेगा, so one of the sector is pharma. So pharma, we have seen a very good up move also in a few of the stock, and that is backed by the good earning growth also. ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिना अर्निंग सपोर्ट के स्टॉक चल रहे हैं. तो pharma is the one sector which is looking good at a current juncture. Again, being a defensive play, FMCG is the one sector where investor will try to hide because of this increase in volatility in the market. And then few oil and gas companies which are trading at a very reasonable valuation. So companies like ONGC, or for that matter oil marketing companies, which are trading in a single digit price to earning multiple. So those are the few sectors where investor will try to hide in the short term. However, from a long term perspective, I think ultimately the growth sectors such as banking, or for that matter NBFCs, auto ancillary, consumption, all this sector will continue to do well. However, if somebody is a really long term investor, I think a gradual deployment is the right strategy at a current juncture. क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि अब मार्केट यहाँ से वन साइड पॉजिटिव होकर के एक स्ट्रॉन्ग रैली देगा. आई फील मार्केट में गो इन अ कंसोलिडेशन मोड फॉर 2-3 months, and then once there is a enough clarity on multiple events like US election outcome, the interest rate trajectory by US and other central bank, maybe post that we may see a sustained rally in the market. तो till that time मुझे लगता है कि थोड़ा वोलेटिलिटी बढ़ेगी, तो थोड़ा सा ग्रेजुअल डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी आप अडॉप्ट करोगे तो भी आई थिंक इट विल वर्क. So any trading bets that you have today? So again, we are focusing on a bottoms up stories at the current juncture. और as of now what we are seeing कि जो small size mid size companies हैं, वहां कहीं ना कहीं अर्निंग ग्रोथ कंटिन्यूसली बेहतर आ रही है. तो रिसेंटली हम लोग ने एक हाईटेक पाइप कर एक कंपनी है, दिल्ली बेस्ड कंपनी, उस पर कवरेज इनिशिएट किया था. तो they are into structural steel tube business, and they cater to all the infrastructure and oil and gas, Jal Jeevan Mission and all those subsector. तो वहां हमने देखा है कि कंपनी की जो कैपेसिटी है 0.3 मिलियन टन से एक्सपेंड होकर के 1 मिलियन टन हो रही है नेक्स्ट ईयर. और उसी के चलते जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है उसका मिक्स भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है. दैट विल लीड टू द एक्सपेंशन इन EBITDA. So our estimate is that in FY24 the company has reported PAT of 44 crore, and we expect by FY26 this profit should grow to 140 to 150 crore in FY26, and our price target is of 195 rupees with investment horizon of 12 to 18 months. सनी सर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में जुड़ने के लिए. I'll let you go because markets are volatile and you will be busy tackling the situation. Thank you so much for your time. One last question for you, Basu sir. बांग्लादेश में जो हो रहा है उसे आप कैसा देखते हैं? The Bangladesh crisis and its impact on India. Well, the impact on India is negative. No question about it. But Bangladesh, we had a very friendly government there. We now have any government that follows Hasina-led Awami League government is going to be less friendly to India, and in the initial months it'll be even more unfriendly because we are seen as the protector of Hasina and the Awami League. So to the extent that Indian companies have an exposure to Bangladesh, there is going to be a little bit of pressure on those types of companies. I think there are some FMCG players like Marico, etc., that have significant exposures. Dabur, I think, has a plant. So there are some, but the impact will be relatively mild, I think, on the overall market. But from a strategic standpoint,
we have lost an important friend in the neighborhood. The next few months and years will potentially be much more volatile. I think the chief advisor of the new interim government is not particularly inimical to India, but he has written an article in the Economist magazine, which is quite frank in saying that India was a friend and protector of the previous government, and therefore, India needs to rebuild bridges with others. So that's about as clear as it gets. But for Bangladesh, India is a very important market. India is the second largest market for Bangladeshi exports. And so it's not as if Bangladesh can completely disengage. Also, India, I think Bangladesh is the third largest market for our exports, and we have a big trade surplus with Bangladesh. So, as neighbors, this is natural. And I don't think Bangladesh can suddenly disengage from India and seek secondary markets for its imports from India. And therefore, I think the economic relations will remain, but Bangladesh is going to go through a period of volatility. There are hundreds of killings happening. I think the fact that hundreds of Awami League supporters are being killed. It seems that even national icons like Mashraf Murtaza, the former captain of the Bangladesh team, cricket, his house has been burned down. His whereabouts are unknown. So, and of course, as a Bengali Hindu, I strongly condemn the killings of Hindus that is happening in Bangladesh. Completely innocent persons cannot be killed just because there is a change of government. It is ludicrous, and I hope that India will raise this matter, and the world community ought to raise this matter. That a minority community is being targeted for absolutely no fault of theirs. Their houses are being burned. Their places of worship have been destroyed. At least 40 or 50 of them. This is absurd. I mean. When there is one such incident in India, there's a huge uproar around the world. There are 40 or 50 mandirs destroyed in Bangladesh just in the last 2 days. This cannot be countenanced by the world community. It should not be. And therefore, these are also issues. But of course, from the market standpoint, the matter is quite a mild one. But I think the other aspects too need to be paid attention to, and I hope that the Indian government will lead the way in bringing the world community around to condemning the summary killings of innocent people, including Awami League politicians. I'm told 29 MPs have been killed and their houses destroyed. I mean, this is street justice. It is not normal in a so-called democracy. They've now re-established democracy, but they're killing dozens and scores of people, more than hundreds of people. This needs to stop. I hope the world community will condemn it and bring some order and try to ensure that there is order. Muhammad Yunus, the chief advisor, the Waqar al-Zaman, the army chief of staff, it is their responsibility now to re-establish order and stop wanton killings of people without any form of judicial process. Basu sir, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए. Thank you so much for being with us. प्रोग्राम को यही समाप्त करते हैं और कल आपसे फिर मुलाकात होगी. Thank you so much for watching and keep watching Jagran Business.